amount of also need to be financed through global sources. Therefore, we also want to make IFSC a global hub for फाइनेंस करना होगा। इसलिए हम आईएफएससी को सस्टेनेबल फाइनेंस का भी एक ग्लोबल हब बनाना चाहते हैं। भारत को एक लो कार्बन इकोनॉमी बनाने के लिए जरूरी ग्रीन कैपिटल फ्लो के लिए गिफ्ट आईएफएससी एक एफिशिएंट चैनल है। ग्रीन बॉन्ड्स, सस्टेनेबल बॉन्ड्स, सस्टेनेबिलिटी लिंक्ड बॉन्ड्स जैसे फाइनेंशियल प्रोडक्ट्स का विकास होने से पूरी दुनिया की राह और आसान होगी। आप जानते हैं कि भारत ने COP28 में एक प्रो प्लैनेट इनिशिएटिव के तौर पर ग्लोबल ग्रीन क्रेडिट इनिशिएटिव का ऐलान किया है। मैं चाहूंगा कि यहां मौजूद सभी अनुभवी लोग ग्रीन क्रेडिट के लिए एक मार्केट मैकेनिज्म डेवलप करने पर अपने आइडिया जरूर दें। साथियों, भारत आज विश्व के फास्टेस्ट ग्रोइंग फिनटेक मार्केट में से एक है। फिनटेक में भारत की ताकत गिफ्ट आईएफएससी के विजन से जुड़ी है, जिसके कारण ये स्थान फिनटेक का एक उभरता हुआ केंद्र बन रहा है। 2022 में आईएफएससी ने फिनटेक के लिए एक प्रोग्रेसिव रेगुलेटरी फ्रेमवर्क जारी किया था। इनोवेशन और एंटरप्रेन्योरशिप को बढ़ावा देने के लिए आईएफएससी में एक फिनटेक इनिशिएटिव स्कीम भी है, जो इंडियन और फॉरेन फिनटेक्स को ग्रांट देता है। गिफ्ट सिटी में दुनिया के लिए ग्लोबल फिनटेक वर्ल्ड का गेटवे और फिनटेक लेबोरेटरी बनने की क्षमता है। मेरा आप सभी से आग्रह है कि इसका ज्यादा से ज्यादा लाभ उठाएं। साथियों, अपनी स्थापना के कुछ वर्षों के अंदर गिफ्ट आईएफएससी जिस तरह ग्लोबल कैपिटल फ्लो का प्रोमिनेंट गेटवे बन गया है, वो अपने आप में अध्ययन का विषय है। गिफ्ट सिटी ने एक यूनिक ट्राई सिटी कंसेप्ट को डेवलप किया है। ऐतिहासिक शहर अहमदाबाद और राजधानी गांधीनगर के बीच स्थित गिफ्ट सिटी की कनेक्टिविटी एक्सेप्शनल है। गिफ्ट आईएफएससी का कटिंग एज डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर एक ऐसा प्लेटफॉर्म देता है जिससे बिजनेस की स्पीड और एफिशिएंसी बढ़ जाती है। इसकी ग्लोबल कनेक्टिविटी के बारे में आप भलीभांति जानते हैं। गिफ्ट आईएफएससी एक ऐसा मैनेजमेंट बनकर उभरा है जिससे फाइनेंशियल और टेक्नोलॉजी वर्ल्ड के सबसे बिगेस्ट माइंड इसकी ओर अट्रैक्ट होते हैं। आज आईएफएससी में 580 ऑपरेशनल एंटिटीज हैं, 3 एक्सचेंजेस जिसमें इंटरनेशनल बुलियन एक्सचेंज भी शामिल है, 25 बैंक्स जिसमें 9 फॉरेन बैंक शामिल है, 29 इंश्योरेंस एंटिटीज, 2 फॉरेन यूनिवर्सिटीज, 50 प्लस प्रोफेशनल सर्विसेज प्रोवाइडर्स, जिनमें कंसल्टिंग फर्म्स हैं, लॉ फर्म्स हैं, सीए फर्म शामिल हैं। मुझे विश्वास है अगले कुछ वर्षों में गिफ्ट सिटी दुनिया के सर्वश्रेष्ठ इंटरनेशनल फाइनेंशियल सेंटर में से एक होगा। साथियों,
भारत एक ऐसा देश है जहां गहरे लोकतांत्रिक मूल्य है और ट्रेड एंड कॉमर्स की ऐतिहासिक परंपरा है। भारत में हर इन्वेस्टर या कंपनी के लिए मोस्ट डाइवर्स रेंज ऑफ अपॉर्चुनिटीज मौजूद है। गिफ्ट को लेकर हमारा विजन भारत की ग्रोथ स्टोरी से जुड़ा है। मैं आपके सामने कुछ एग्जाम्पल्स रखता हूं। आज 4 लाख एयर पैसेंजर्स हर रोज यात्रा कर रहे हैं। 2014 में हमारे यहां पैसेंजर एयरक्राफ्ट की संख्या 400 थी, जो आज बढ़कर 700 से ज्यादा हो गई है। पिछले 9 वर्षों में भारत में एयरपोर्ट्स की संख्या 2 गुनी हो चुकी है। आने वाले वर्षों में हमारी एयरलाइंस करीब 1000 एयरक्राफ्ट खरीदने जा रही है। इन परिस्थितियों में गिफ्ट सिटी द्वारा एयरक्राफ्ट लीजर्स को कई तरह की सुविधाएं देना बहुत ही रिमार्केबल है। भारत के वाटर रूट से माल की आवाजाही तो बढ़ ही रही है, जहाजों की संख्या भी बढ़ने जा रही है। IFSC का शिप लीजिंग फ्रेमवर्क इस ट्रेंड का पूरा फायदा उठाने का अवसर दे रहा है। इसी तरह भारत का स्ट्रांग IT टैलेंट, डाटा प्रोटेक्शन लॉज और गिफ्ट का डाटा एम्बेसी इनिशिएटिव्स सभी देशों और बिजनेसेस को डिजिटल कनेक्टिविटी की सिक्योर फैसिलिटी देता है। भारत के युवा टैलेंट की बदौलत हम सभी बड़ी कंपनियों के ग्लोबल कैपेबिलिटी सेंटर्स का बेस बन गए हैं। साथियों, अगले कुछ वर्षों में भारत दुनिया की तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था और 2047 तक भारत विकसित देश बन जाएगा। न्यू फॉर्म्स ऑफ कैपिटल, डिजिटल टेक्नोलॉजीज और एज फाइनेंशियल सर्विसेज इस यात्रा में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएंगे। अपने एफिशिएंट रेगुलेशंस, प्लग एंड प्ले इंफ्रास्ट्रक्चर, लार्ज इंडियन हिंटरलैंड इकोनॉमी तक पहुंच, बेनिफिशियल कॉस्ट ऑफ ऑपरेशंस और टैलेंट एडवांटेज की वजह से गिफ्ट सिटी ऐसे अवसर तैयार कर रहा है जिसकी कोई बराबरी नहीं कर सकता। आइए गिफ्ट IFSC के साथ मिलकर ग्लोबल ड्रीम्स को पूरा करने के लिए दिशा में हम मिलकर के आगे बढ़े। बहुत जल्द ही वाइब्रेंट गुजरात ग्लोबल इन्वेस्टर समिट भी होने जा रहा है। मैं उसके लिए भी सभी इन्वेस्टर्स को निमंत्रित करता हूं और आपके इन प्रयासों को अनेक अनेक शुभकामनाएं देता हूं। आइए हम मिलकर दुनिया के गंभीर मुद्दों का समाधान खोजने की दिशा में इनोवेटिव आइडियाज को एक्सप्लोर करें और उसे आगे बढ़ाएं। बहुत बहुत धन्यवाद। Great energy we gain from our Honorable Prime Minister, we begin our session on Vision for Gift IFSC. I would request the dignitaries to please come up on the dais. First of all, I would request Honorable Chief Minister Shri Bhupendra Bhai Patel
Shri Rajkumar, Chief Secretary, Government of Gujarat, Shri K. Rajaraman, Chairman, IFSCA, Shri Hasmukh Adya, Chairman, Gift City, and Shri Tapan Ray, MD and CEO, Gift City. We request all of them to please step up on the dais. I would request Shri Hasmukh Adya, Chairman, Gift City Company Limited, for his welcome address and setting the tone for Vision for Gift IFSC. Good morning to all of you, ladies and gentlemen, Honorable Chief Minister, Chief Secretary, Mr. Rajaraman, Mr. Tapan Rai, distinguished participants who are participating from all over the world, some of the panelists also who are here. I'd like to welcome all of you again. First of all, I'd like to express a deep sense of gratitude to Honorable Prime Minister for his remarkable address today. The kind of optimism that he has shown and the kind of expectations that he has set for the country and for all of us are truly great, and that increases our responsibility as the administrators of Gift City to do much more than what we are doing. So I would also like to welcome our Honorable Chief Minister. He has always been a source of strength for all of us. He is always present in all the Gift City programs, and he has also been reviewing the progress of Gift City occasionally. This is the Gift IFSCA's flagship event, which is sort of the purpose is to unite leading minds in policy, business and technology. That's the purpose. The last such session was very successful, and we had seen about 1 lakh people participating in the Infinity Forum 1. And this one is even far exceeding that, and we hope it will be a very major event for all of you to know what's happening here and to give you ideas and to help us in making this better. As we know, let me set the context for Gift City. As we know, India is set to achieve a target of 5 trillion economy by 2027, and it is expected that 3 trillion out of 5 trillion will be service sector, coming out of service sector. Also, there is an independent target of having a services export of $1 trillion by 2030. So that's another target that we are trying to pursue. Government of Gujarat also, the state of Gujarat has got little deficiency in terms of services composition in the GDP. We are basically a manufacturing state, and we need to scale up our share of services sector. In that context, location of Gift City in Gujarat is quite an advantage. So the kind of role that Gift City can play in the services sector, not only for Gujarat but for the whole country, is significant. What has been achieved so far, everybody knows, and Honorable Prime Minister himself described how many units are here, what's happening. All this, all of you know. We already clocked a 1 billion mark in revenue in FY23 in Gift City. But our target is far higher. We are going to set a target of 20 to 25 billion US dollar revenue by FY30. Now that's multiple times, and we all have to gear up for that. So what we have done is, with the help of some consultants, we have identified 20 plus key opportunities across 6 sectors, which are banking, fund management, capital markets, insurance, and GIC/GCC and FinTech. Now 12 out of these 20 opportunities have been identified as core priority, in which we'll be sort of working first. Now there are 2 things to be done in Gift City. One is world-class infrastructure creation, which is basically the job of Gift City company, which is job of Mr. Tapan Ray and the board of Gift City. The second is that we want to put in even much better regulatory framework in place so that all the glitches are removed. And we already have a unified regulator, and we all know that after having a unified regulator in 2020, what a difference it has made. Now, in fact,
the demand is outstripping the supply of infrastructure available in GIFT City. So we're trying to tackle both. We are working hand in hand, regulator and the GIFT City company. And also, in order to meet with the infrastructure requirement, we have decided to front load creation of all the common infrastructure for GIFT City. So we won't wait till the buildings come. We will make our utility tunnels, roads, parks, whatever is required, IT, infrastructure. So we are going to front load all the infrastructure preparation. When we consult some of the players who are already in GIFT City, we get a feedback, constant feedback. One of the feedback that we have got is that social infrastructure, social life infrastructure is probably lacking in GIFT City. We are aware of this. So we are going to cover three things. One is immediate, second is medium term, and third is the long term. For immediate, there is already a food court which is created in which some of the Indian brands. So after we give approval also, the constructor will take some time to do it. But that will include so many attractions, including our desire is to bring that London Eye kind of an attraction here. So we can call it a gift eye. So that would also come as part of that thing. For the residential, we will have, because there are a lot of residential units which are under construction, and we will see people settling down in these new apartments by July of 2024. By then, they would all start settling down in the new apartments. But that's not enough. We had given work of about 5,000 units to various builders. So the government also has recently decided to give us permission to build more. So in the next phase, we will try to see to it that a lot of studio apartments are available in the new construction which takes place, ready to move in, fully furnished, fully serviced studio apartment, so that whoever wants to come to GIFT City, they will have an immediate place to dwell in. So that's the plan that we have. As far as other social infrastructure is concerned, school is already there thanks to the efforts of all my predecessors and the previous board and the managing director, that we already have a very nice, functional, good quality school in GIFT City. And also a hospital is coming up. Leelavati is setting up a hospital, which is a multi-speciality hospital, huge one. So that will be an advantage. And in addition to this, in order to complement the infrastructure, the GIFT City board has decided to create one tower of its own with the help of ADB loan. And that will have full height, and we would make it available for three things. One is for the fintech training institutions, so that abundant manpower, very well trained in fintech, is available within the GIFT City. We would have some floors for startup ecosystem in that tower, and we would have some for research and development, R&D in fintech sector. So that's the plan that GIFT City itself has. We don't want to wait for other people to come. GIFT City company will invest in such a tower, and we will make this ecosystem available. Lastly, I would like to say that we have a very strong board of GIFT City company now. Recently, we had inducted 3 people who are eminent people. One is Ajay Tyagi, who was the chairman of
SEBI earlier. He's a good brain on capital markets. He knows capital market in and out. He also worked in finance ministry. So he's of great use to all of us in giving his ideas. Then we also taken Mr. Sushil Chandra, who was the ex-chairman of CBDT and also subsequently was Chief Election Commissioner. He's on our board now. We have got Professor Rajat Munna, who is the director of IIT Gandhinagar. And already we had one financial professor in Anjali Bansal, who is already there in the board. So with this, our board has become a very strong, and we have a very strong managing director also, who is managing things very well. So with these few words, I would welcome all of you to come to GIFT City. And please do fall back on us for any query, any kind of a difficulty that you have. We'll be happy to help you. Thank you very much. Once again, I welcome Honorable Chief Minister. Thank you. Thank you so much, sir, for setting the tone. I would now request our Honorable Chief Minister of Gujarat, Shri Bhupendra Bhai Patel, to grace us today with his special address. राज्य के पाटनगर गांधीनगर में गिफ्ट सिटी कॉम्प्लेक्स में आयोजित इन्फिनिटी फोरम 2.0 के शुभारंभ अवसर पर मेरे साथ मंच पर उपस्थित राज्य के मुख्य सचिव श्री राजकुमार जी, गिफ्ट सिटी के चेयरमैन डॉक्टर हसमुख अढ़िया जी, मैनेजिंग डायरेक्टर श्री तपन रे, IFSC के चेयरपर्सन श्री के राजारमन जी, उपस्थित अधिकारीगण, फाइनेंस सेक्टर से जुड़े हुए आप सभी महानुभाव, देश विदेश से पधारे हुए डेलीगेट्स, आप सभी को मेरा नमस्कार। विश्व नेता और देश के यशस्वी प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र भाई मोदी जी ने देश के अर्थतंत्र में अंत्योदय और सूर्योदय के लक्ष्य को लेकर इन्फिनिटी फोरम की शुरुआत की है। वैश्विक महामारी कोरोना के बाद पूरी दुनिया ने आर्थिक संकट का सामना किया है। ऐसे समय में इन्फिनिटी फोरम जैसे प्लेटफॉर्म के माध्यम से हमारे प्रधानमंत्री जी ने डिजिटल इकोनॉमी और फिनटेक इकोनॉमी को एक नई दिशा देने का सफल प्रयास किया है। टेक्नोलॉजी के माध्यम से देश के उद्योगों के लिए नए अवसर खुले और दुनिया के फिनटेक को एक मंच मिले, इसीलिए इन्फिनिटी फोरम की स्थापना की गई है। प्रधानमंत्री जी ने आत्मनिर्भरता के मंत्र के साथ देश के आर्थिक विकास की जो गारंटी दी थी, वह आज ग्राउंड रियलिटी बन गई है। उनके नेतृत्व में देश में बनी इकोनॉमी पॉलिसीज, इंफ्रास्ट्रक्चर के तेज विकास और एक्सपोर्ट में बढ़ोतरी के कारण भारत दुनिया की 5th लार्जेस्ट इकोनॉमी बन गया है। अब इसी के अगले कदम में प्रधानमंत्री जी ने भारत की इकोनॉमी को $5 ट्रिलियन तक ले जाने का लक्ष्य लिया है। अभी हम देश की जीडीपी में गुजरात 8% से अधिक का कंट्रीब्यूशन कर रहे हैं, लेकिन इस टारगेट को हासिल करने के लिए हमने 10% के कंट्रीब्यूशन का लक्ष्य रखा है। मेरा मानना है कि इस दिशा में फिनटेक सेक्टर और डिजिटल इकोनॉमी का रोल बहुत ही महत्वपूर्ण रहेगा। फिनटेक इनोवेशन के साथ अपॉर्चुनिटीज भी लेकर आता है। श्री नरेंद्र भाई के मार्गदर्शन में गुजरात ने ऐसी ही अपॉर्चुनिटीज के लाभ लेते हुए देश की पहली फाइनेंशियल टेक सिटी गिफ्ट सिटी की स्थापना की है। माननीय प्रधानमंत्री जी का मानना है कि हमें दुनिया में बदलते रुझान को समझना चाहिए। हम दुनिया में तभी प्रतिस्पर्धी बन सकते हैं जब हम उनके एक कदम आगे रहेंगे। हम सौभाग्यशाली है कि प्रधानमंत्री जी की इन विचारों का लाभ
गुजरात को पिछले 2 दशक से मिल रहा है। उन्हीं के मार्गदर्शन में आगे बढ़ते हुए आज गुजरात में देश में पॉलिसी ड्रिवन स्टेट, प्रो पीपल गवर्नेंस और डेवलपमेंट का रोल मॉडल बना है। इसी के परिणाम स्वरूप आज जब दुनिया के देश भारत के साथ साझेदारी करना चाहता है तो उनके लिए गुजरात और गिफ्ट सिटी बेस्ट डेस्टिनेशन फॉर इन्वेस्टमेंट बन गए हैं। हमारी आईटी और आईटीज पॉलिसीज के फिनटेक इंडस्ट्रीज को काफी लाभ मिल रहा है। इसी के परिणाम स्वरूप आज गिफ्ट सिटी में 450 से अधिक यूनिट ऑपरेशनल है। इन इन्वेस्टर्स के माध्यम से हम भारत को वर्ल्ड मार्केट से जोड़ने की दिशा में आगे बढ़ रहे हैं। प्रधानमंत्री जी के शब्दों में कहूं तो गिफ्ट सिटी केवल एक कैंपस नहीं बल्कि यह भारत के भविष्य की आशाओं को रिप्रेजेंट कर रहा है। आज दुनिया भर से फाइनेंस सेक्टर से जुड़े 1 लाख से अधिक प्रोफेशनल ने सामने मैं वर्ल्ड क्लास गिफ्ट सिटी के डेवलपमेंट को लेकर कुछ महत्वपूर्ण घोषणाएं करना चाहता हूं। गिफ्ट सिटी के पास साबरमती के 2 किनारों पर 4.5 किलोमीटर स्ट्रेच का रिवर फ्रंट डेवलपमेंट हमने मंजूर कर दिया है और ये टोटल 9 किलोमीटर जितना जल्द पूरा हो सके इतना हम जल्द पूरा कर लेंगे। गिफ्ट सिटी में अभी हडिया जी ने बताया कि रेसिडेंशियल यूनिट एडिशनल रिक्वायरमेंट को ध्यान में रखते हुए हमने हाल ही में यहां एडिशनल रेसिडेंस यूनिट बनाने को भी मंजूरी दे दी है। हमने पिछले साल गिफ्ट सिटी के फेज 2 को शुरू करने की घोषणा की थी। हाल के 886 एकड़ एरिया को हम बढ़ाकर 3300 एकड़ तक विस्तार कर रहे हैं। इसका डेवलपमेंट प्लान भी तैयार हो गया है और हम वाइब्रेंट समिट 2024 से पहले उसे जाहिर करेंगे। इस डेवलपमेंट प्लान के तहत जब यहां टाउन प्लानिंग स्कीम बनेगा तब गिफ्ट सिटी में एडजॉइनिंग में सभी सोशल इंफ्रास्ट्रक्चर सुविधा से युक्त एक बड़े टाउनशिप का भी निर्माण होगा। मैं आप सबको यह भी बतलाना चाहूंगा कि जुलाई 2044 तक मेट्रो रेल भी गिफ्ट सिटी तक ऑपरेशनल हो जाएगी। हमने हाल ही में मेट्रो के इस रूट के काम की समीक्षा भी की है और प्रोग्रेस को देखते हुए हम विश्वास से कह सकते हैं कि ये टाइम से पूरा कर लेंगे। गिफ्ट सिटी तक मेट्रो रेल ऑपरेशन होने से अहमदाबाद से आने वाले प्रोफेशनल्स और एम्प्लॉयज को बहुत ही बड़ी सुविधा मिलेगी। मैं आज इस कार्यक्रम के माध्यम से फाइनेंशियल सेक्टर से प्रोफेशनल्स, फिनटेक कंपनी और दूसरे सेक्टर्स को भी यह ऑपरेशंस एश्योरेंस देना चाहूंगा कि गिफ्ट सिटी में आपकी बिजनेस एक्टिविटीज को एक नया आयाम मिलेगा। इसीलिए मैं आमंत्रित करता हूं कि आप गुजरात में आए, इस गिफ्ट सिटी में आए और यहां के वर्ल्ड क्लास इंफ्रास्ट्रक्चर, वर्ल्ड क्लास वर्क कल्चर और गुजरात सरकार के यूनिक इनिशिएटिव्स का लाभ ले। ये हमारे लिए गौरव की बात है कि प्रधानमंत्री जी ने गुजरात के मुख्यमंत्री के रूप में जो भी इनिशिएटिव्स लिए वह आज इंस्टीट्यूशनल बन गए हैं। उन्हीं के द्वारा 2003 में शुरू की गया एक ऐसा ही इनिशिएटिव्स वाइब्रेंट समिट आज पूरे वर्ल्ड के थॉट लीडर्स, इन्वेस्टर्स और पॉलिसी मेकर्स के लिए नॉलेज और एक्सपीरियंस शेयरिंग का ग्लोबल प्लेटफॉर्म बन गया है। वाइब्रेंट समिट के पिछले 9 एडिशन से गुजरात और देश के विकास में बहुत ही महत्वपूर्ण योगदान दिया है। अब इसकी अगली कड़ी 10th एडिशन जनवरी 2024 में प्रधानमंत्री जी के मार्गदर्शन में आयोजित होने जा रही है। गेटवे टू द फ्यूचर की थीम के साथ हम इस इवेंट सेमीकंडक्टर, ग्रीन हाइड्रोजन, ई मोबिलिटी, आईटी और फिनटेक जैसे सेक्टर्स को प्रमोट देंगे। मेरा अनुरोध है कि आप सभी इस वाइब्रेंट समिट में जुड़े और प्रधानमंत्री जी के विजन विकसित भारत
एट 2047 को साकार करने में सहभागी बने। इन्हीं अपेक्षा के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देता हूं। भारत माता की जय, वंदे मातरम, जय जय गरवी गुजरात। Thank you so much, sir, for the wonderful announcements, the gift that you gave to the gift today, and for always nurturing great dreams by Honorable Prime Minister. I would now like to request Shri Tapan Ray, MD and CEO, Gift City Company Limited, to sum up the session and offer vote of thanks. Good morning, ladies and gentlemen. Honorable Chief Minister of Gujarat, Shri Bhupendra Patel ji, Chairman Gift CL, Shri Hasmukh Adia ji, Chief Secretary Government of Gujarat, Shri Rajkumar ji, Chairperson IFSC, Shri Raja Raman ji, distinguished guests, it is my privilege today to be present amongst this very distinguished audience who have assembled here in Gift City from India and abroad for the second edition of the Infinity Forum. This event also marks the run-up to the 10th Vibrant Gujarat Global Summit scheduled for January 2024. At the outset, I must thank our visionary Honorable Prime Minister not only for creating Gift City, but also for nurturing it at every step. His address in today's event has truly inspired us, and we will take the cue from him and move ahead to make Gift City a truly global financial and tech city. I must also thank our Honorable Chief Minister for his wholehearted support to Gift City. He has always been supportive, and as you would have just heard about the announcements he made, and he has ensured that the journey towards making Gift City a truly vibrant and truly technology financial center will be on its course. Gift City, India's first operational greenfield smart city and its international financial service center, is a project of national importance. It is the outcome of Honorable Prime Minister's vision to create a world-class finance and IT zone in India to provide international financial services not only to India but to the entire world. It is strategically positioned as a gateway both for inbound and outbound international financial services to India. It is designed to be a sustainable city, hosting prominent financial and tech companies engaged in wide-ranging spectrum of financial services, as was mentioned by our Honorable Prime Minister. As we target our Honorable Prime Minister's vision to make India a Vikasit Bharat, that was being said that India should be a developed country by the year 2047, we need to accelerate the adoption of technology by creating strong digital and tech infrastructure and designing the relevant application thereof. So the launching of Infinity Forum as an annual calendar event from Gift City, therefore, could not have been more well-timed. Infinity Forum is the amalgam of international finance and technology. It is the very essence of Gift City. With one of the world's leading startup ecosystems and fast becoming a preferred destination for capital investments, India is favorably positioned to take advantage of the key global opportunities in terms of international banking, retail banking, regional treasury centers, aircraft and ship leasing, green financial services, fund management, bullion trade, reinsurance, global capability centers, fintech, climate finance, and many others. Similarly, Gift City has the unique strength of having a unified regulator with a principle-based regulatory approach, a 10-year tax holiday on business incomes from IFSC entities, high-quality sustainable infrastructure, educational infrastructure around Gift City. This is just to name a few of the advantages. It can optimally leverage these to bring about win-win outcomes. And as the Honorable Prime Minister mentioned, financial empowerment of the citizens.
As we bring the inaugural session of the Infinity Forum to a close, let us begin the journey of deep diving into the fascinating world of fintech and come up with innovative solutions that add value and given the dynamic trends of finance and technology. I am sure the three tracks that cover the green stack and the longevity economy as a part of today's deliberations are topical and are going to enhance our understanding of the way forward in this regard. I extend my heartfelt thanks to Honorable Chief Minister, whose vision for the development of Gujarat and GIFT City is indeed encouraging. I thank our Chairman, GIFT City, Shri Hasmukh Adiyaji, for sharing his valuable insights for the development of the city and of its financial center. He has been instrumental in his earlier roles as well in the development journey of GIFT City. I also thank IFSC Chairman Shri Rajaramanji and his entire team for proactively taking the GIFT IFSC agenda forward. I thank Chief Secretary Shri Rajaramanji for his continuous support from the state government. Finally, I conclude by giving a call to carry forward the learnings of this forum. Infinity, as we have learnt in school and our colleges, connotes the limitless. And friends, this is only the beginning. Thank you all. Thank you so much, sir. I would now request Shri K. Rajaramanji to please offer a memento as a token of appreciation to our Honorable Chief Minister. I'll request Shri K. Rajaramanji to offer a memento to Chief Secretary, Government of Gujarat, Shri Rajkumarji. Thank you so much, everyone. We end this session here, and our plenary sessions for the day will begin in just a while. I request all of you to please be seated, as we'll have a look at a video that will give us something about the vibrant Gujarat. As you all know, this event is a precursor to the 10th edition of Vibrant Gujarat Global Summit 2024. Let's have a look at this video. Papa, what are you planting here, Papa? Your bright future. "20 years ago, just like this, Prime Minister Narendra Modi, the then Chief Minister of Gujarat, planted a seed of a vision in the soil of Gujarat. There were challenges and obstacles, countless hurdles and innumerable constraints. Undaunted and undeterred, he thought big. His visionary leadership surmounted them all. He looked beyond the horizons. He looked ahead of the times. He looked into the future, responding to challenges, overcoming adversity, and enthusiastically exploring newer opportunities. 20 साल पहले हमने एक छोटा सा बीज बोया था। आज वो इतना विशाल और बृहद वाइब्रेंट वटवृक्ष बन गया है। Vibrant Gujarat Global Summit. One man leading from the front. One idea reigning supreme. 20 years, bringing about an impactful transformation. 100,000 MOUs signed. Nearly 75,000 commissioned or at various stages of completion. $55 billion in foreign direct investments. With perseverance and conviction, Shri Narendra Modi conceptualized Vibrant Gujarat, a visionary initiative that has blossomed into a premier global platform for business networking, knowledge sharing, and strategic partnerships. Today, the Vibrant Gujarat Global Summit is a global event of bonding. One idea, a reality translated on the ground.
India's first international financial services center, Gift City, now operational. World's largest diamond hub, strengthening global supply chains. World's tallest statue, dedicated to the people. India's first petroleum chemicals and petrochemical investment region, championing circular economic policies. India's first greenfield smart city, setting the benchmark for sustainable development. India's largest hybrid energy park, pioneering renewable energy. Highest exports from India achieved. We break here for a few minutes. We request you all to please come back in the hall by 11:45 so that we can begin our sessions on time. A kind request to all of you to please gather around and be seated by 11:45. We can have a tea break till then. Thank you so much.